Good morning दोस्तों, welcome to Buddha Riders. I hope all of you are doing great. First of all, I am really honored and thankful to all of you for such a lovely response for my videos. मेरे हिंदी टूटे फूटे होने के बावजूद भी आप लोगों ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया है, जितना भी, I am really honored for that. Thank you guys. It means a lot to me. So as you have already seen in the title, these GIVI Side Racks और Pannier Racks, they are bike specific और ये बहुत सारे मॉडल्स के लिए आते हैं. Say for example Royal Enfield, Benelli, BMW, Ducati, Harley Davidson, Kawasaki, Husqvarna, Honda, Yamaha and so on. मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. प्लीज हैव अ लुक. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. GV sticker, Biker and Biker sticker and a keyring. Thanks. Quality is really premium. So let's sum it up. These are the two side racks for both sides and the connecting rod with it. What else do we have? Oh, these are the instructions, the nuts, bolts, spacers, washers. That's it. एक बात एडमिट करना पड़ेगा कि जीवी का क्वालिटी फिनिश का स्टैंडर्ड एकदम अलग है. आउटस्टैंडिंग. सो हियर इज अ लिटिल ट्विस्ट गाइस. आई नो कि जीवी का पाउडर कोटिंग इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, बट टू मेक इट लुक इवन बेटर आई एम गोइंग टू गेट इट पेंटेड इन सिल्वर, जो कि मैंने जाना का क्रैश गार्ड को भी करवाया था. वो भी ब्लैक पाउडर कोटेड ही आता है. तो नेक्स्ट जो क्लिप आप देखोगे वो आफ्टर द पेंट जॉब वाला होगा. It's time to start the installation now guys, and I'll go real fast. So these are the side racks. So these are the tools जो हमें चाहिए होगा for installation. And these are those nut bolts जो मैंने instructions follow करके sort करके रखा हुआ है. तो as per diagram, pillion foot pegs का जो bolt है वो हमें रिप्लेस करना है with these GV bolts. Here we have a shut clip जिसे हमें nose plier से निकाल लेना है. ऑलरेडी लेफ्ट फुट पिक से मैंने निकाल लिया है और इस बोल्ट को रिप्लेस करना है न्यू बोल्ट के साथ. I always use Loctite thread locker when fixing nuts and bolts. फायदा यही है कि वाइब्रेशंस में बोल्ट्स लूज नहीं होते. एनीवेज आप ऐसे भी टाइट कर सकते हो. हो गया. सेम हमें राइट फुट पेग में करना होगा. नेक्स्ट ग्रैब रेल के नीचे एक पॉइंट है. लेट्स सी. ओह, दिस वन. लेट्स टेक आउट द कैप्स. नाउ सेम इन द राइट साइड. नाउ ये सॉकेट बोल्ट, टिपर नट एंड स्पेसर्स वहां लगाना है. So, this is the left rack. We will start from the upper point from the top rack. Now the foot peg point. And finally under the grab rail point.
अब राइट साइड रैक को एग्जैक्टली लेफ्ट की तरह लगाना है। एंड दिस इज द कनेक्टिंग रॉड जो हमें साइड रैक्स में दिए गए पॉइंट्स में लगाना है। ऐसे So guys, this is the basic fitting of the side rack. तो एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, as these are side racks and not saddle stays, so these are much stronger than the saddle stays and can sustain a lot of tortures on road. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। So stay tuned. See you very soon in my next video. Till then, take care. Have a nice time. Bye.